حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه. नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, उनके वालिद उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और अर्ज़ किया कि मैंने अपने इस बेटे को एक ग़ुलाम बतौर हबा दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या ऐसा ही ग़ुलाम अपने दूसरे लड़कों को भी दिया है? उन्होंने कहा कि नहीं। तो आपने फरमाया कि फिर इनसे भी वापस ले ले। Narrated by An-Nu'man bin Bashir, that his father took him to Allah's Messenger, peace be upon him, and said, I have given the son of mine a slave. The Prophet asked, have you given all your sons the like? He replied in the negative. The Prophet, peace be upon him, said, take back your gift then.